Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 22nd lecture of this series of Indian Constitution. Now let's start with Article 22. 22 is again a manifestation of Article 21. 21 में life and personal liberty है, so उसी का dimension 20 भी है और उसी का dimension 22 भी है. Article 22 is basically talks about two things. When you arrest a person, the safeguard provided for arrest. एक तो जनरल अरेस्ट हुआ, किसी ने क्राइम किया है, फॉर दैट यू अरेस्ट हिम. एक दूसरा होता है अरेस्ट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया है, उसके भी सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन अंडर दिस आर्टिकल. क्लाउज 1 and 2 talks about general arrest, that is of punitive arrest. Punitive means what? To punish. Means when a person committed an offense and thereafter you arrest him. So that is basically for the proceedings, arrest, investigation, etc. So that is called punitive, for the purpose of punishment. ट्रायल होगा, then you will be punished. अरेस्ट करके आप पनिश नहीं करोगे, ट्रायल होगा, उसके बाद the court will punish. If it is proved that the offense is committed by him, the court may punish him. And then there are some arrests which are called preventive arrest. Preventive matlab you suspect that the accused will commit an offense, and therefore before committing the offense you arrest him so as to prevent him from committing the offense. So clause 4 से लेकर 7 तक that is related to preventive detention या preventive arrest, and clause 3 is a general declarative provision. So that is basically you have to read and understand कि प्रिवेंटिव अरेस्ट में क्या सेफगार्ड्स होंगे और अरेस्ट में क्या सेफगार्ड्स होंगे. अब अरेस्ट के सारे सेफगार्ड्स तो यहाँ पर नहीं लिखे. some safeguards are here written because for that you have to read CRPC to know all the safeguards for punitive arrest. So let's see Article 22. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be on of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. So two things they are talking about. एक तो they have told you the grounds of arrest. You have to be told about the grounds of the arrest. Second is you have right to consult a lawyer to defend yourself. Now the second clause, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. So ये आपको मिलेगा वहाँ पर section 57 of the CRPC. So what they are saying is, from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. So what they are saying is, suppose you arrested a person here, thereafter you will take him to the police station और उसके बाद you will take him to the judicial magistrate in court. तो ये जो टाइम है आपका पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में और पुलिस स्टेशन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में, इसको आप 24 घंटे में काउंट नहीं करोगे. थाने के अंदर उसको 24 घंटे तक रख सकते हो. 24 घंटे ख़त्म होने के पहले आपको पुलिस स्टेशन से निकलना पड़ेगा फॉर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो सपोज हियर 1 आवर टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन से इधर 1 आवर टेकन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू रीच देयर. तो टोटल आप 26 घंटे टाइम ले सकते हो. सो वी आर सपोजिंग दैट 1 घंटा इधर आने में लगा, 1 घंटा मजिस्ट्रेट के पास जाने में लगा, टोटल 26 घंटे आप रख सकते हो. सो 26 घंटे पूरे होने से पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने इसको एक्यूज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू कीप हिम इनटू द पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स, then you have to take the magistrate's permission, and that will be there in section 167 clause 2 of CRPC. प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट आप करोगे
सेक्शन 57 में भी और सेक्शन 167 क्लॉज 1 में of CRPC, but further custody of the accused will be given to the police officer by the magistrate under the 167 clause 2 of CRPC. So you will read it into the CRPC in detail. So ये फर्स्ट और सेकंड क्लाउज तो हो गया, that is related to punitive arrest when a person has committed a crime and then you arrest him. So for there the safeguards are provided. लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को गिरफ्तार करते हो तो इतने सारे सेफगार्ड्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को गिरफ्तार करते हो तो इतने सारे सेफगार्ड्स नहीं होंगे। जैसे मान लो इलेक्शंस आने वाले हैं एंड देयर आर सम हिस्ट्री सीटर्स, और क्योंकि आपको पता दे आर नोटोरियस एंड दे मे कमिट सम रॉन्ग, और देयर आर सम पर्सन यू मे बिलीव दैट देयर दे इज, तो उनको आपने उठाया, उनको अरेस्ट किया and then you take them into the custody. So that period for which you keep them in custody, वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की ड्यूटी वहाँ पर नहीं होगी, because in preventive detention you keep them in custody for longer period and then you can produce them within reasonable time. All that given in fourth clause onward. थर्ड क्लाउज एक बार देख लो, नथिंग इन क्लाउज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy alien. So what is an enemy alien? Suppose India is at war with Pakistan. So Pakistani citizen in India will be called an enemy alien. आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ में वॉर में है, then the citizen of that country in your territory they called an enemy alien. So उस समय उस कंट्री के सिटीजन्स आपकी कंट्री में हैं, they may be doing spying or whatever, तो उनको आप उस ग्राउंड पर गिरफ्तार कर सकते हो, so that you prevent them from doing any wrong to your country. Then the second one is to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. अब there are many laws of preventive detention, जैसे पहले टाडा था, now you have POTA, and similarly many other laws, MACOCA, all that. They are all preventive detention laws, जिसमें आप suspicion पे that a person may commit some offense in future, आप उस suspicion पे उस person को गिरफ्तार कर सकते हो and you may keep him in custody. वहाँ पर they are saying the safeguards of 1 and 2 will not apply, मतलब उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तुरंत बताने की जरूरत नहीं है, लॉयर से कंसल्ट करने का राइट तुरंत देने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है. दैट इज व्हाट दे आर डिक्लेयरिंग. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में such safeguards are not there, but there are safeguards which are given after that. Now let's see clause 4. No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months. अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को गिरफ्तार किया है, उसको 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रख सकते कस्टडी में, और उसके लिए भी आपको एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन चाहिए होगा कि 3 महीने से ज़्यादा आप रख सकते हो कि नहीं. No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board consisting of persons who are or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention. तो अगर आप हाई कोर्ट के ओपिनियन में, एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन में 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन उस केस में जरूरी है, देन यू कैन कीप हिम विद द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, अदरवाइज नॉट. एंड एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट विद द हाई कोर्ट जजेस. दे वर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस. Provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under subclause B of clause 7. What they are saying is कि लॉ बनाएगा पार्लियामेंट ने मान लो 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बना लिया कि आप 1 साल तक कस्टडी में रख सकते हो.
आप 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। लेकिन उसमें सेफगार्ड ये है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना होगा तो एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन लेना होगा। और मान लो एडवाइजरी बोर्ड ने परमिशन दे दिया दैट यू कैन कीप हिम इन कस्टडी, तो फिर भी लॉ प्रोवाइड्स 1 ईयर, तो एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के बाद भी आप 1 साल से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, बिकॉज दैट इज़ द अपर limit provided by the law. So we have seen an example of 1 year. So it depends upon the parliament that particular law. It is allowed the upper limit 6 months, 1 year, 2 year, whatever. So जो भी अपर लिमिट पार्लियामेंट ने फिक्स किया है, एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन से भी आप उसके बियॉन्ड कस्टडी में नहीं रख पाओगे। Means what? You arrest a person and prevent him into the preventive detention. You keep him into the custody maximum for 3 months. If you want to keep him beyond that, then you means what? The authority, the government. Then you will have to seek the permission of the advisory board. Suppose the advisory board permits, then you will continue with the detention. How much of detention? So the upper limit of the detention is fixed by the parliament in that particular law. So advisory board का permission लेकर भी आप उसके beyond custody में नहीं रख सकते। Then clause B, such person is detained in accordance with the provisions of any law made by parliament under subclause A and B of clause 7. So that we see in clause 7. Now let's see the 5th clause. It is the very important clause. When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. So this is the safeguard. वैसे तो they are saying 3 महीने तक आप रख सकते हो, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से उसके बाद भी रख सकते हो. That is what they are saying, that you can keep him in custody for 3 months and thereafter also you can do that with the permission of the advisory board. So 3 महीने तक उसको कस्टडी में रखा और उसको कोई भी राइट नहीं दिया. So that is again you see against the spirit of the constitution. So उसके लिए जो सेफगार्ड है वो क्लाउज 5 में है. वो कह रहे हैं कि as soon as possible उसको उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स बताओगे और उसको रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब उसको अपने लॉयर से मिलने का और अथॉरिटीज के सामने उसको अपना केस प्रेजेंट करने का राइट होगा. अब as soon as possible does not means 3 months. As soon as possible means 24 hours also. So it may be 24 hours also. It may be 7 days. So it will depending upon the circumstances. So they are not putting an upper limit. जैसे कि बाकी केसों में 24 घंटे का जो लिमिट है, यहाँ पर 24 घंटे का लिमिट नहीं दिया है. They are saying as soon as possible. As soon as possible cannot be 2 months or 3 months. As soon as possible means reasonably with 2 days, 5 days, 4 days, 10 days, depending upon. अब मान लो कंट्री में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम चल रहा है and authorities are engaged in all that. उस केस में मे बी उसको आप 7 दिन बाद अपॉर्चुनिटी दो, 10 दिन बाद अपॉर्चुनिटी दो, लेकिन as soon as possible cannot be seen stretched for a long period. So that is where the safeguard is provided. और हर केस में कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि आपने कितने दिनों में उसको अपॉर्चुनिटी दिया, whether it was as soon as possible or not. And if you have done it with a delay, the court may raise a question mark upon the authorities. There as soon as possible का कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहे हैं कितने दिन. That depends upon the facts of the case. So when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity. They are saying the earliest opportunity and shall afford him the earliest opportunity. But earliest opportunity का कोई टाइम पीरियड तो दे नहीं रहे. एक तो कह रहे हैं as soon as possible, as soon as may be. आपको उसके गिरफ्तारी के ग्राउंड बताने पड़ेंगे. As soon as may be you have to tell him the grounds of his arrest and the earliest possible opportunity you have to give him to the right to representation against the order. Representation means consult your lawyer
or maybe you can go for a writ of habeas corpus in the High Court, or maybe you make a representation to the higher authorities. तो वो जो रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसको वो आपको एज सून एज अर्लीस्ट पॉसिबल देना पड़ेगा, और ग्राउंड्स आपको उसको एज सून एज पॉसिबल बताना पड़ेगा। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नंबर ऑफ डेज तो नहीं दे रहे, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस वेदर दिस कंप्लायंस इज डन और नॉट। अब इस पे एक केस लिख लीजिए आप, ऊषा अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2006 सुप्रीम कोर्ट। और एक और केस नोट डाउन कर लीजिए, राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973 सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले का केस है ऊषा अग्रवाल से। सो राइट डाउन, इन द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन द नॉर्मल सेफगार्ड्स ऑफ producing the accused before 24 hours to magistrate is not available. The very nature of the detention, that is, it is for preventive purpose, suggests that the normal safeguard should not be provided. However, such a detention cannot be without any safeguards. One essential safeguard is that the detention cannot be done beyond a period of 3 months without the permission of the advisory board. And there also, even with the permission of advisory board, the detention cannot go beyond the upper limit fixed by the parliament. The other important safeguard is as per clause 5 dash as soon as possible the detenue यहाँ accused नहीं बोलोगे आप, क्योंकि he is not an accused of a crime, क्योंकि कोई crime तो किया नहीं है उसने, so you called him detenue. As soon as possible the detenue shall be informed about the grounds of his arrest and detention, and also at the earliest possible opportunity he shall be allowed to make a representation to authorities or to court against his detention and for that purpose he shall be allowed to consult a lawyer. Here it is not specified as to what should be the number of days to fulfill the said safeguard, but the detaining authority shall make sure that there should not be any unreasonable delay. The delay is a matter of examination on the basis of the facts and circumstances of the case. तो कितना डिले किया है वो डिपेंड करेगा उस केस के फैक्ट्स क्या है। अब मान लो अरेस्ट करने के बाद 1 महीना लगा दिया, अब 1 महीने तक क्यों नहीं दिया उसको राइट टू रिप्रेजेंट? सो इट इज नॉट यू कैन गो इट फॉर 1 month और मोर 35-40 days. सो इट शुड बी रीजनेबल टाइम, 5 दिन 10 दिन, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजंस एज व्हाई इट इज डिलेड so much. Now let's see the clause 6. Nothing in clause 5 shall require the authority making any such orders as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considered to be against the public interest to disclose. मतलब accused को जब आप grounds बताओगे अरेस्ट के, तो जो फैक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट में है एंड फॉर द पब्लिक सेफ्टी द फैक्ट्स शुड नॉट बी रिवील्ड, देन द अथॉरिटी कैन विदहोल्ड दोज फैक्ट्स एंड नीड नॉट टेल दोज फैक्ट्स टू द डिटेन्यू।
अब क्लाउज 7 में दे आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसके गाइडलाइन. पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब the circumstances under which and the class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provisions of subclause A of clause 4. मतलब 3 महीने बाद भी, 3 महीने के बियॉन्ड भी बिना एडवाइजरी बोर्ड के कंसंट के जा सकते हो अगर पार्लियामेंट ने वैसा लॉ बनाया है तो. रीड इट वंस अगेन. पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर which and the class or classes of case in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provisions of subclause A of clause 4. मतलब 3 महीने के बियॉन्ड का भी लॉ बन सकता है विदाउट एडवाइजरी बोर्ड. द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस be detained under any law providing for preventive detention. So the parliament may fix the upper limit. Maximum 1 साल 2 साल that the parliament can do whatever time parliament wants. And then the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under subclause A of clause 4. So all the proceedings takes place before the advisory board that will also be laid down by the parliament. That will parliament may by law prescribe that what should be the procedure followed by an advisory board. So इसका main clause है that is clause 5 जिसमें reasonable safeguard provide किया है. Otherwise clause 1 and 2 obviously arrest that is related to the normal arrest proceedings और उसके लिए the CRP is having very elaborate proceedings. So that's it for this article and this topic. Thank you for watching this lecture.